डिस्कस करबा मॉक टेस्ट 7। फर्स्ट क्वेश्चन कोच रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग। प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग टा कौन कौन आम जो प्रोजेक्ट स्टार्टिंग स्टार्ट करते आम पाखे केतेटा क्राइटेरिया थाए जो गोटे प्रोजेक्ट को आम केमी कंट्रोल करवा केमी शेड्यूलिंग करवा पॉट एनालिसिस सीपीएम है ये सब हूँ सीपीएम पॉटर माने गोटे नेटवर्क डायग्राम तापर ड्रॉ करवा तो स्टार्टिंग जो आम बार चार्ट ड्रॉ करती कि नेटवर्क डायग्राम है ये सब होती कौन गोटे प्रोजेक्ट को केमी कंट्रोल करवा केमी एनालिसिस करवा तो तारी विषय हमको देजी फास्ट क्वेश्चन accomplished before the actual project starts से कोच व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स कोच एमान भितर कोटा भूल बोली हमें कहबा फास्ट हमें कोन कोन दी तीनटा स्टेप्स नॉर्मल हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट थाए दैट इज योर प्रोजेक्ट प्लानिंग शेड्यूलिंग अनदर वन इज योर प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग तो ऑप्शन को पढ़ कोटा होच को से कोच कोटा भूल बोली कोच सेकंड ऑप्शन कोच ऑपरेटिव ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन तो दुईटा कौन अच्छे ठीक अच्छे aimed at recognizing the difficulties during the execution and applying measures to deal with these difficulties during the project जदि आमर कोनोसी असुविधा हैला ताको हमें चेक करि परिबा दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग किंतु ऑप्शन 1 जो कहूची accomplished before the actual project start माने प्रोजेक्ट स्टार्ट हबा पूर्वरु प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग होची कोन प्रोजेक्ट स्टार्ट करि सल्ला करिबा परे तो ऑप्शन 1 ओनली 1 second question कोची the key to profitable operation for project cost control is एमान को भितरु cost control लो कोटा होची गोटे मेथड फर्स्ट कोची to keep the project cost within the cost budget and knowing when and where job costs are deviating तो ऑप्शन एटा ही ठीक लागुची से कोची ऑप्शन एटा कोन कोची to keep the project cost within the cost budget आम बजेट भितर रखिबा ता सहित नोइंग व्हेन द वेयर द जॉब कॉस्ट डेविएटिंग ता सहित आम पाखरे गोटे आइडिया रहइबो जे हमर जो बेसिक खर्च हमर अछि ताठो केते हमर एक्चुअल डेविएट करूचे तो ऑप्शन ए टा ही सुटेबल लागुची आ बाकी ऑप्शन पढे रखनी ते कोचे की प्रॉफिटेबल ऑपरेशन कोड कॉस्ट कंट्रोल 3 नंबर which of the following a type of engineering contract एमान को भितरु कोटा होची गोटे इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट रे कौन जाए आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट लमसम कॉन्ट्रैक्ट मोटा मोटी जो काम गुडा करबा ऑल इन कॉन्ट्रैक्ट लेबर कॉन्ट्रैक्ट ये सब होची इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉलोइंग ए टाइप ऑफ इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट तो लमसम आइटम रेट लमसम एंड आइटम रेट तो ठीक हो ऑल ऑफ द एबव सर दुईटा सी हबनी सर दुईर सी कौन कौच टू कीप द प्रोजेक्ट कॉस्ट इक्वल टू द ओरिजिनल कॉस्ट एस्टिमेट प्रोजेक्ट रो जो कॉस्ट अछि तमे जो ओरिजिनली जो कॉस्ट एस्टिमेट करियो तारि सहित इक्वल रखिबो सेमी तो किसी मैंडेटरी नहीं इक्वल इन रहिबो कारण हम पाखरे कॉन्टिजेंसी भी अछि वर्क चार्ज भी एस्टैब्लिशमेंट अछि एक्स्ट्रा भी आसी ता पारे भितर कम रखिबा ही सर पारे ता भीतर रखिबा बट एठी कोन देछि ता भीतर रखिया को ट्राई करिया बट एठी कोन देछि मे भी हेई पारे न हेई पारे बट एठी देखो छ हमें इक्वल रखिबा बी तो इक्वल देछि एठी भी सी भी इक्वल देछि एठी देछि टू कीप द प्रोजेक्ट कॉस्ट हायर इक्वल इक्वल एठी कोन देछि विदिन द कॉस्ट भीतर रखिया को ट्राई करिया इक्वल हेले मान दैट इज योर क्रिटिकल हे जिवो सर 3 नंबर ऑल ऑफ द अबव 4 नंबर क्रिटिकल पाथ कोन कहूछ क्रिटिकल पाथ माने होछ कोन जीरो स्लैक मान तम पाखरे कोनोसी फ्रीडम नाही तम पाखरे कोनोसी फ्रीडम नाही दैट इज योर क्रिटिकल पाथ सबुठु हां जीरो फ्लोट बा जीरो स्लैक ताको कहबो ऑप्शन ए आ सर मिनिमम एक्सपेंडिचर कर दो देखो मिनि स्लैक बा फ्लोट माने होची कोन फ्रीडम फ्रीडम सपोज गोटे काम को करबा को हमर एक्चुअली क्रिटिकल एक्टिविटी रे 3 दिन अछि आ हमको भी 3 दिन लागुची ताले स्लैक केते हे गला जीरो स्लैक माने फ्रीडम केते जीरो
जदि गोटे काम को 3 दिन रे क्रिटिकल एक्टिविटी रे हमको 3 दिन समय लागुची आमे ताको 2 दिन रे सारी दउछंती तमाने हम पाखरे गोटे दिन फ्रीडम रहिला दैट इज अ सब क्रिटिकल एक्टिविटी सुपर क्रिटिकल एक्टिविटी माने नेगेटिव आसीबो किंतु फॉर क्रिटिकल पाथ कोन आसीबो जीरो ही आसीबो कि नहीं जेतिक दरकार सेतिक हम पाखरे आउ टोटल कोन नाही कोनसी फ्रीडम हम पाखरे नाही जेतिक दरकार सेतिक करबो 5 नंबर A system is said to be equilibrium when the resultant of all the forces acting in it. कौन है जो resultant of all the forces? Summation of horizontal force equal to 0, summation of vertical force equal to 0, summation of moment about a point equal to 0. 0. Option C. Next, 6 number. So number coach, which of the following is the are the property of good quality stones? Good quality stones एमान भितरु कोठा होछ गोटे प्रॉपर्टी तो गुड क्वालिटी स्टोन रो क्रॉसिंग स्ट्रेंथ केते रहबा दरकार 100 एमपीए बा 1000 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर 100 एमपीए न्यूटन पर एमएम स्क्वायर बा 1000 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कोचे फर्स्ट ऑप्शन कोन कोचे क्रॉसिंग स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेटर देन 1000 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर तो एटा गोटे प्रॉपर्टी होबो ताल स्पेसिफिक ग्रेविटी शुड बी ग्रेटर देन 2.7 बी भी ठीक अछि देन स्टोन शुड बी वेल सीजन्ड बिफोर पुटिंग ए बी सी तीनटा को हो आंसर ऑप्शन ए 7 नंबर द स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन ऑफ VG माने विस्कोसिटी ग्रेडिंग VG 40 VG 40 रो पेनिट्रेशन केते रहबा दरकार 35. हां मन रख दो सीरियली 10 20 30 40 10 रो केते पेनिट्रेशन 80. पेनिट्रेशन केते 80 VG 10 विस्कोसिटी ग्रेडिंग माने कोन विस्कोसिटी ग्रेडिंग माने 10 जदि अछि 10 अछि इनटू 80 कर दो तार विस्कोसिटी पाइछ तो जहार विस्कोसिटी जते अधिका से सेते कम पेनिट्रेट करिवो पेनिट्रेशन करिवा कमी जिवो तो VG 10 लो आसीबो 80 mm VG 20 रो आसीबो 60 mm 60 mm. VG 30 रो 45 mm VG 40 रो 35 mm 35. question is asking about VG 40 your answer will be 35 35. 8 number as per BIS bitumen grading 85 by 40 65 by 25 the first and second number represents what 85 by 40 कौन represent कुछ Softening and penetration on point. 85 होचे softening 85 हो softening और then 40 50 25 एटा कौन represent कुछ Penetration. penetration represent कुछ bitumen grade 85 by 40 जिमे सपोज हमें कोन कोन पेनिट्रेशन 1 by 10 mm रे कंसीडर करंती सपोज 80 by 100 ग्रेड त माने 8 ने की 10 mm रो पेनिट्रेशन ऑप्शन ए हे जिवो सॉफ्टनिंग आउ पेनिट्रेशन पॉइंट 9 नंबर इफ द इंडिविजुअल फुटिंग्स आर टू क्लोज यदि आइसोलेटेड जोठी देई परिबोनी बहुत क्लोज अछि सेठी कोन प्रोवाइड करिवो कंबाइंड फुटिंग रेक्टेंगुलर बा ट्रापेजोइडल यदि इक्वल लोड थिबो देन रेक्टेंगुलर यदि अनइक्वल लोड थिबो देन ट्रापेजोइडल black cotton soil is unsuitable for foundation because of its Swelling and swelling shrinkage. shrinkage black cotton soil रे सबुठ अधिका थाए मॉन्ट मोरिलो नाइट सर मैट सोडियम फाउंडेशन मॉन्ट को पाए नहीं कोटा मैट फाउंडेशन ता प्रो क्वेश्चन टा मैट फाउंडेशन हमें कोट यूज करियो मैट बा रैप फाउंडेशन में कोट यूज करियो जोटे कोन थिबो मोर नंबर ऑफ कॉलम्स थिबो गोटे लाइन रे बहुत सारा कॉलम थिबे जोटी सॉइल कोन थिबो तुमरो वीक थिबो सेठी हमें करबा मैट फाउंडेशन बा रैप फाउंडेशन कारण हमें कोन करिया गोटे स्लैब भडी बिछेबा सेथिरे हमें हमर कॉलम को रखिबा बट से एठी कोन कोची
if the individual footings are too close, जोटी स्पेस लिमिटेशन थाए सेठी हमें कौन यूज करिबा कंबाइंड फुटिंग, जोटी सॉइल टा वीक थाए सेठी हमें कौन यूज करिबा मैट बा राफ्ट फाउंडेशन। 10 नंबर ब्लैक कॉटन गला स्वेलिंग 11। The minimum center to center distance of friction piles of 1 meter diameter is 3 to 4. minimum center to center distance पचास केते 3 to 4 3 to 4. 3 to 4 मीटर आउ एंड बियरिंग पाइल्स देछले केते हेतंदा 2 to 3 2.5 to 3. 2.5 to 3 बाय एठी ऑप्शन अनुसार 2 to 3 2 to 3 होची कहा पई एंड बियरिंग पई 3 to 4 होची कहा पई फ्रिक्शन पई दुई प्रकार पाइल अछि एंड बियरिंग पाइल फ्रिक्शन पाइल आउट होची कंबाइंड पाइल तीन प्रकार तापर जदि हम इंस्टॉल करबा डिफेन पाइल इंस्टॉल कले कोन डिस्प्लेसमेंट पाइल आउट होची नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल। सर 1.2 डाई अभी देखियो कि 1.2 कोन 1.2 डाई अभी One. पचारियो कि एबे सर 1 मीटर 1.2 डायमीटर लिखा है फ्रिक्शन पाइल्स ऑफ 1 मीटर डायमीटर एटा होची बेसिक ब्रिज 1 मीटर डायमीटर जदि हम पाकर थाए देन स्पेसिंग केते रहइबो दैट इज योर आईएस कोड स्टैंडर्ड वैल्यू जदि 1 मीटर डायमीटर होची देन हमें एतिक स्पेसिंग दबा। सर एटा 1.2 बोली पचारिबोनी तो बोलजे नहीं 1 मीटर 12 the exterior angle between outer face of a wall is known as 12. exterior angle outer face of the wall को कौन बोले क्वियन कहबा exterior angle between outer face of a wall is known as क्वियन हला एटा को टाइप रो स्टेयर Plan of segmental space. segmental डॉग लेग टा कोन हाफ टन ना फुल टन Half turn. हाफ टन माने केते 90 ना 180 180. 180 where resin is used as resin in varnish a suitable solvent माने varnish रे को solvent यूज करे छै varnish टा कोन turpentine हैला varnish कोड लगा जाए varnish टा कोड यूज करा जाए for a protective coating of door Food. wood surface door रे लगा जाए नी शाइनिंग करिया पे varnish 15 the presence of dampness while applying the primer affects the life of जदि dampness रहिला primer apply कला बेले जदि dampness माने कोन moisture रहिला dampness जदि रहिला हैला affects the life of Plastic pan. plastic plant Oil paint. oil paints लाइफ को ये badly affect करियो हैला oil paints को badly affect करियो 16 the total amount of water required for hydration जदि gel pores न रहिला then 23% जदि gel pores रहिला then plus 15% extra add करियो that is your 38% for minimum water required for the hydration ताले एठी देखो सुटेबल आंसर कोन देछि 32 हबोनी 52 62 तो सुटेबल कोन होछि 42 ऑप्शन बी 42 एक्चुअली हबा कथा केते 38 मिनिमम यूज करियो 38 the test which is not used to measure the workability of concrete एमान भितर कोटा workability of concrete पई यूज करा जाय नाही compaction factor हम यूज करंती slope यूज करंती ली चैटलेस टा कहा पई यूज करा जाय Due to lime. soundness of the cement पई यूज करा जाय ली चैटलेस apparatus again आउ कोन अछि soundness पई Autoclave.
Autoclave test. Autoclave test is used to determine the free magnesium. Lime and free lime magnesium both. Lime. lime ପାଇଁ এটা ହଉଛି lime Leach plus Atlas. magnesium both autoclave ଆଉ free lime ପାଇଁ ହେଲେ Leach Atlas apparatus. Leach Atlas apparatus ର length କେତେ? 16.5 mm. Very good. 16.5 centimeter. 165 mm. 165 mm বা 16.5 centimeter. 18. Strength of concrete is directly proportional to strength of concrete kaha sahita directly proportional water to cement ratio. cement ratio jodi Water cement badibo ratio. then strength kon heijibo Increase. କମିବ କମିବ water to cement ratio ବଢୁଛି ମାନେ weight of the water ବଢୁଛି weight of the water ବଢୁଛି ମାନେ workability ବଢିବ workability ବଢିବ ମାନେ strength କମିବ ହେଲା ତାହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ ଏଠି cement to water Water ratio cement କାରଣ ratio. କଣ ଦେଇଛି directly proportional ଦେଇଛି cement ର ଆମର concrete ର strength is directly proportional to inversely proportional to water to cement ratio ବଢିଲେ strength କମିବ ହେଲା ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ କହୁଛେ directly proportional ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ cement to water ratio ଯଦି ବଢୁଛି ତାମାନେ cement content ବଢୁଛି ତ strength କଣ ହବ ବଢିବ ହେଲା ଏଇଟା ମାର୍କ କରିବ cement to water ଦେଇଛି water to cement ଦେଇନି 19 1500 gram of water is required to have a cement paste 1875 normal consistency केते पचारछे normal consistency रो फॉर्मूला कोन weight of the water to 25%. into 100 percentage बाहर करियो weight of the water केते 15 gram of water is required to have a cement paste 1875 gram cement paste होज केते 1875 ग्राम हैला माने सीमेंट आ पानी मिसी की 1875 ताले पानी केते 1500 सीमेंट ताले केते 375 ताले कोन हे जो आंसर 375 डिवाइड बाय 1500 ग्राम नो वाटर दरकार सीमेंट टू वाटर इनटू 100% केते बारी वाला 25 तक दे देसी 25%. next survey a line of 5 meter on the original map is shrunk to माने 4.6 by 5 into 8 by 80 हो जिवो आंसर 0.92 by 80 1 centimeter to 86.95 meter recently class करे हो 0.92 by 80 कारण shrinkage factor question ले देइछि shrunk scale is equal to shrinkage factor into original scale question ले देइछि 1 centimeter to 80 meter shrinkage factor देइछि कोन shrinkage factor is equal to length after shrinkage by length before shrinkage factor is equal to 4.6 by 5 एडा आछि कते 0.92 ताले shrunk scale हे जिवो 0.92 into 1 by 80 1 centimeter to 86.95 meter आसी option C the main factor to be considered first in town planning topography ecology of the land भी हे परिबो तो अधिका suitable आंसर हो C topography A road actually 2600 meter long was found to 2580 meter when measured with a defective 30 meter chain. Correction due to standard length apply करियो wrong into wrong right into right wrong तुमको पचारिछि wrong chain length पचारिछि that will be 30 divided by 30 into 2600 divided by 2580 ହେଲା 30.23 आसीबो ए वैल्यू 30.23 माने l dash is greater than l l dash जदी l लो अधिका हला देन हमें कोन करबा कम मेजर करबा माने एरर आसीबो नेगेटिव एरर जदी नेगेटिव देन करेक्शन आसीबो पॉजिटिव
आंसर हो 23.3 सेंटीमीटर। The distance between the points measured along a slope 428. If the difference in level is 62 meter, difference in level is 62 meter, then the horizontal distance between them. कौन करिवो? Pythagoras theorem. H square by 12 correction due to slope, correction due to slope जदि h देथिबो l देथिबो then correction due to slope होची h square by 12 जदि थीटा देथिबो correction due to slope होइजिबो l whole into 1 minus cos theta। हेलो आज मॉर्निंग रे क्वेश्चन क्वेश्चन है डिवीजन क्लास 423 बार Which type of instrument is used to provide offset at right angle? French cosstaff होचे multiple of 45 degree रो angle measure करियो। Adjustable cosstaff होचे any angle measure करियो। Optical square होचे right angle measure करियो। Open crossstaff होचे right angle measure करियो। ताले कोडा मारिबे आंसर से Optical कोची square. which type of instrument Optical is square. used to provide offset at right angle? Offset at right angle ପାଇଁ ଆମେ ସବୁଠୁ commonly କଣ यूज କରନ୍ତି? Open cross tab କାରଣ open cross tab ଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ easily available। Optical square ଟା ଏତେ easily available ନଥାଏ ସବୁଆଡେ। Open cross tab ଟା ସବୁଠୁ easily available ଥାଏ। କିନ୍ତୁ accurate result କୋଉଠି ଆସିବ? Prism square ରେ। ସବୁଠୁ accurate result ଆସିବ prism square। But ସବୁଠୁ easily available that is your open cross tab to measure 90 degree offset। 25 in a quadrantal bearing system माने reduced bearing system Option C, sir. background noise आसी के recording recording करछनी background noise आसी म्यूट मार दे सीटा in a quadrantal system the bearing of a line is measured quadrantal माने कोन either north to नबो नले south to नबो either in clockwise direction नबो नले in anti clockwise direction नबो जोड़ा तुमको पाख हबो clockwise or anti-clockwise from north or south, whichever is nearer line towards east or west. Whole circle bearing देले केवल north ରୁ नबो आ सबोले clockwise that is your whole circle bearing। whole circle bearing 0 ରୁ नेकी 360 डिग्री इधर किछि भी एंगल दे परिबे किंतु quadrantal bearing system 0 ରୁ नेकी 90 डिग्री either north theta west north theta east south theta west नले south theta east। 26 if the back side and force side distance are kept equal during leveling observation कोटा ऑप्शन सी हैला 25 ऑप्शन सी हैला क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जोटा ही पाख हबो नॉर्थ नले साउथ। if the back side and force side distance are kept equal during leveling observation then the effect of both refraction and earth curvature refraction out होची curvature curvature correction होची minus d square by 2r refraction correction होची plus 1 by 7 of d square by 2r 0.0785 आसो आ टोटल को हम कंबाइंड करेक्शन बाहर करबा टोटल करेक्शन हेजबा माइनस 0.0673 d स्क्वायर वेयर d रहइबो किलोमीटर रे करेक्शन रहइबो मीटर रे कोन आंसर B. Suppose Zero, the sir. backside and foresight distance are kept equal during leveling observation. 0 no 0. Option A. 0 କେମିତି ହବ 0 କେମିତି ହବ equal ଦେଇଛି ନା if backside and foresight distance are kept equal during leveling observation
बालांसिंग ऑफ द साइट रो आमे कोन जानछो फॉर्मूला बालांसिंग ऑफ द साइट जोदी आमे कोनोसी गोटे स्टाफ नौचंती सेटे बैक साइड नौचंती आउ सेतिरे फोर्थ साइड भी नौचंती आ सेटा इक्वल आसुची गोटे पॉइंट रे आमे कोन करछंती बैक साइड माने बेंचमार्क ऊपर फास्ट रीडिंग हैला फोर्थ साइड माने होची ताको इंस्ट्रूमेंट को पुनी कोन करबा टेलीस्कोप को बुलेई की जो भी पॉइंट दरकार ताको नबा दी जंग रीडिंग सेम ही आसुची दी जंग रीडिंग जदी सेम आसुची ता माने एंको भीतर कोनोसी एरर अछि कि जदी सेम लेवल ऊपर अछंती कोनोसी एरर नाही एटा ही पछाछ देन इफेक्ट ऑफ बोथ रिफ्लेक्शन एंड कर्वेचर ता माने पूरा पाखा बाकी ऑब्जर्वेशन नौचंती ना रिफ्लेक्शन होची ना कर्वेचर होची जीरो ता कोन बैलेंसिंग ऑफ साइड calculate the error in staff reading on a staff distance 100 meter 100 meter माने तुमको d दे देला 100 meter d हे गला 100 meter due to out of the center of the bubble n दे देला 4 sensitivity of the bubble होची 30 second per 2 mm division l दे देला 2 mm ताले को फॉर्मूला यूज करिवो सर्वर फोन नंबर Sir, S 206265 by ND 206220. वेरी गुड s by nd 206265 सेकंड क्वेश्चन ले s तुमको हमर अल्फा दे देछि 30 सेकंड हला कैलकुलेट द एरर इन स्टाफ माने s केते पचारछि n देछि 4 d देछि 100 206265 तले s केते भारिबो 0.058 0.058 जदि तुमको s n d न दे कि l आउ r दे थांता देन अल्फा रो वैल्यू फॉर्मूला कोन थांता l upon r into 206265 the direct method of contouring डायरेक्ट मेथड होची कोन डायरेक्ट मेथड माने सब पॉइंट रे हमें जाई कि स्टाफ को लगे कि हमें कोन को इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करी कि बाहर करबा लेबलिंग सब पॉइंट रे तो एटा होची गोटे मोस्ट एक्यूरेट मेथड किंतु एटा टाइम टेकिंग पड़िबो छोटो एरिया पे पड़िबो द डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग इज प्रिफर्ड कोड प्रिफर करबा जोठी कोन थिबो sir Small area. स्मॉल एरिया आउ मोर एक्यूरेसी ऑप्शन बी ताले बेसी एक्यूरेट हम एठी देछि खाली मोर एक्यूरेसी एठी देछि स्मॉल एरिया सहित मोर एक्यूरेसी तो ऑप्शन बी इनडायरेक्ट मेथड रे कोन हबो इनडायरेक्ट मेथड रे जल्दी हे जिवो किंतु एक्यूरेसी मिलिबोनी इंटरपोलेशन मेथड में बाहर करबो इनडायरेक्ट रे 29 if the plane table is not horizontal in direction at right angles to the alley the line of sight is parallel to the fiducial edge माने जोटो छुरी रो धार भली थिबो आ सेठी मार्किंग हेतिबो एटा होछ alley dead in plane table तो जो छुरी रो धार भली थिबो आ सेठी मार्किंग हेतिबो ताको हम कहबा fiducial edge हला से कोचे if the plane table is not horizontal माने प्लेन टेबल टा हॉरिजॉन्टल नाही इन अ डायरेक्शन एट राइट एंगल्स टू द alley dead एटा हो सपोज alley dead रो डायरेक्शन तार परपेंडिकुलर डायरेक्शन ले प्लेन टेबल टा कोन अछि हॉरिजॉन्टल नाही द लाइन ऑफ साइट इज पैरेलल टू द फिडुशियल एज किंतु लाइन ऑफ साइट हम जो देखु चंती सेटा फिडुशियल एज को पैरेलल अछि इज पैरेलल टू द फिडुशियल एज ओनली फॉर तला हम सेटा कोन नै परिबा प्लेन टेबल ऊपर गोटे alley dead अछि सेटा हम कोन कर आखिरे देखिबा आई वेन प्रोवाइड कराइतो सेठी आई वेन थिबो ऑब्जेक्ट वेन थिबो जोथि क्रॉस हेयर लागि थिबो हला तो लाइन ऑफ साइट सेथिरे कोन हबो जदि हमरो जो हमें देखु चंती सेटा पैरेलल अछि फिडुशियल एज सहित तले हम कोन काहा को देखि परिबा हॉरिजॉन्टल साइड को देखि परिबा हॉरिजॉन्टली जहां भी थिबो ताको हम देखि परिबा जदि हम पाखर टेलीस्कोप थिबो alley dead टेलीस्कोप थिबो देन जाई कि हमें कोन कर परिबा इंक्लाइंड अपवर्ड नले इंक्लाइंड डाउनवर्ड देखि परिबा जदि खाली क्रॉस हेयर अछि सेतरे खाली हॉरिजॉन्टल साइडिंग कर परिबा 30 photogrammetry एथरो पड़तला क्वेश्चन photogrammetry स्केल ऊपर ए कैमरा हैविंग ए फोकल लेंथ देछि 20 सेंटीमीटर
is used to take a vertical photograph of a terrain having an average elevation of 1000 meter. Average elevation माने कौन small h दे दीजिए 1000 meter. The height above the sea level at which an aircraft must fly. Flying height केते पचारची. In order to get a scale दे दीजिए. Scale दे दीजिए 1:7000 माने RF फॉर्म में दीजिए. आगे फॉर्मूला पके दबा. Scale जानचंती focal length by flying height minus average height. तो scale put कर दियो 1/7000 equal to 20 सेंटीमीटर देइछि माने 0.2 बाई h minus 1000 तो तो बाहर करे h केते बाहर केते बाला 2400 ऑप्शन डी ए क्वेश्चन पड़तला एथरो ए सर एग्जाम पेटी सबु टॉपिक कवर करके जीवो क्वेश्चन जोठी भी आसो जेमिति करि पारि what will be the dry unit weight gamma d पचारछि माने gamma d is equal to g gamma w by 1 plus 1% e E. ହେଲା for a saturated soil देछि माने ई जगह रे कोन पुट कर दबो w into g g gamma w by 1 plus w into g सेवा पुट कर दबो ई जगह रे खाली w into g क्वेश्चन रे w दे देछि 35 g दे देछि 2.5 गामा w यदि किछ न देथिबो 10 नै जिवो 1 हे जिवो बे केते बाछि 13.58. 13.5 option b the mass of solids per unit total volume is defined as mass of solids पर कौन कहलो Bulk mass by of solids per unit total volume dry density bulk माने कौन bulk माने होची total weight of the soil by total volume of the soil एठी किंतु कोन देछि खाली solids रो देछि soil रे हमरो तीनटा जिंस रहइबो गोटे होची solids water आउ air so the solids water आउ air तीन जन को कंसीडर करबा देन ताको हम कहबा bulk density बा total density so the saturated अछि ताको हम कहबा saturated mass density माने solid सहित पानी भी अछि submerged माने पूरा बुडी के अछि आ जदि खाली solids को कंसीडर करबा माने solids आउ air अछि जेतु air रो weight होछि negligible बा 0 तले खाली solids रो weight सहित वॉल्यूम रो कंपैरिजन करबा ताको हम कोन कहबा dry Dry mass mass. option d when does a quicksand condition is developed quicksand condition केतेबेले हेइथाय जेतेबेले adverse flow हेइथाय माने upward movement of the water हेइथाय सेतेबेले effective stress हमर हेइ जायथाय 0 तो सेही केस को हम कहबा quicksand condition downward flow हेले effective stress कोन होई जिवो बढ़ी जिवो ताको हम कहबा favorable flow कोन आंसर option D, sir. Option D. head purging upward flow is increased option d head कौन हो बॉडी 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 ICR रे पहुंच जिवो ICR होची critical hydraulic gradient that is your g minus 1 by 1 plus e 34 coefficient of the permeability is 5 into 10 to the power minus 5 the certain pore fluid if the viscosity of the pore fluid is reduced viscosity is reduced to half coefficient of the permeability ताले कौन होगा Increase होगा. increase होगा केते होबो ताले increase हेगी double है डबल हे जिवो माने 5 sir. अछि माने 10 हे जिवो हां 5 अछि माने 10 हे जिवो कारण permeability is equal to d square into e q by 1 plus e into कौन थिला गामा by Gamma by mu. of कहारो फ्लूइड रो Fluid. जो भी फ्लूइड फ्लो करूची फ्लूइड रो गामा बाय म्यू ता माने विस्कोसिटी जदी बढ़िबो परमेबिलिटी कमिबो हला तो विस्कोसिटी एठी कोन हे जाउची रिड्यूस हे जाउची हाफ ता माने परमेबिलिटी द्विगुणा हे जिवो जहा भी थिबो द्विगुणा हे जिवो 5 into 10 to the power minus 5 अछि 2 टाइम्स हे जिवो 10 into 10 to the power minus 5 कोन हे जिवो 10 to the power minus 4 10 into 10 to the power
-5 option D. 35. If the permeability of a soil, permeability যদি 0.08 ହୁଏ କିଏ ଦେଇଛି, then କୋଉ type ର soil ଏଟା ପଚାରୁଛି। ସବୁଠୁ ଅଧିକା permeability କାହାର? gravel Gravel. greater than 1 centimeter per second। ତାପରେ sand And 1 ରୁ 10 to the power 10 to the power -3। -3. Silt Silt 10 to the power -3 to 10 to the power -6. Clay less than -6 10 to the power -6. less than 10 to the power -6 ତାହେଲେ 0.08 ମାନେ କେତେ 8/100 ଦେଇଛି 8 into 10 to the power -2 କୋଉ କାଟାଗୋରୀ ଆସୁଛି ତାହେଲେ Sand. sand category ଆସୁଛି option B। the decrease in void ratio per unit increase in effective stress को हमें कौन कहबा Coefficient of permeability. Of compressibility. coefficient of compressibility बा हमें तो कौन कहबा AV Every AV is equal to change in void ratio with respect to change in effective stress CC है गले change in void ratio by log of effect change in effective stress coefficient of compression 37 earth pressure at rest is calculated using theory of elasticity Elasticity. रिवीजन क्लास से डिस्कस करथले जदि एक्टिव हैला आउ पैसिव हैला ताले सेटा को केस रे Sand can theory. Hence, किंतु रेस्ट कंडीशन इज एप्लीकेबल टू थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी ऑप्शन डी 38 in a plate load test after every increment in load on plate settlements are recorded till the settlement is less than what standard IS code procedure पछो देछि केते थाए 0.02 0.02 and thereafter the load is increased and test is continued until a load of about what 1.5. 1.5 times the anticipated which IS code or procedure ऊपर पछो देछि plate load test to IS code or procedure 0.02 1.5 39 which test should be carried out for long term stabilizing for a slope in hard soil एमान भितरो को टेस्ट को हमें करिबा for long term stability of a slope in hard soil Consolidation. triaxial under- test to करिबा consolidation undrained CU consolidation माने फर्स्ट स्टेज रे हमें अलाउ करूचंती किंतु सेकंड स्टेज रे हमें अलाउ करू नाहंती undrained अछि undrained माने को केस एडा क्ले केस तो सबले ट्राई करिबो ट्राइएक्सियल टेस्ट करिया पे कारण ट्राइएक्सियल टेस्ट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल कौन हो टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म देछ ना लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी drain dry देखो लॉन्ग ड्राई सॉइल Drained triaxial. Triaxial. ड्रेन ट्राइएक्सियल ड्रेन माने पानी तमे अलाउ करूछो ड्रेनेज अलाउ करूछो ड्रेनेज माने पानी तमे अलाउ करूछो हैला तो जदि सबटु एप्रोप्रिएट देखिबो जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एटा होची गेट रो 1 मार्क का क्वेश्चन 2021 से पढ़ले ए क्वेश्चन टा गेट 2021 शॉर्ट क्वेश्चन टा एटा पढ़ले तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी जदि हमें देखिबा देखो कोटा होची क्ले सॉइल आउटा होची सैंड सॉइल टाइप्स ऑफ द ट्राइएक्सियल टेस्ट जदि देखिबो केते प्रकार अछि गोटे होची यूयू टेस्ट ऑन कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट हैला ठीक है आइडिया रखो ऑन कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट ऑन कंसोलिडेटेड माने पानी जाउ नै अनड्रेन माने भी पानी जाउ माने एटा होची सबुटु कोन क्विक टेस्ट तो एटा त केबे आंसर ही परिबो नै ऑन कंसोलिडेटेड जदि किछ ऑप्शन थिबो एटा आंसर ही परिबो नै नेक्स्ट होची कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट consolidated undrained test माने होची कोन consolidation माने during the first stage गुटे confining pressure रहउची ड्रेनेज हमें अलाउ करूचंती soil sample consolidation होउची but during the vertical loading drainage is not permitted हैला एग्जांपल होउची कोन एग्जांपल होउची Arthen dam stability analysis of the Arthen dam सेटा होउची
कंसोलिडेशन अनड्रेन टेस्ट जीवो बट एठी कोन कहिछि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ ए स्लोप इन हार्ड सॉइल देछि ताले सबुटु बेस्ट आंसर कोन हे जिवो एठी ड्रेन्ड हे जिवो आंसर ड्रेन्ड ट्राइएक्सियल टेस्ट तो कंसोलिडेशन ड्रेन टेस्ट हमें कोंठी करछंती ता माने ड्रेनेज इज परमिटेड ड्यूरिंग द सेल्फ प्रेशर बा कन्फाइनिंग प्रेशर स्टेज आउ सियर स्टेज गोटे दीटा स्टेज अछि गोटे होछि कन्फाइनिंग प्रेशर स्टेज आउट होछि सियर स्टेज दीटा केस रे हमें कोन करछंती ड्रेनेज अलाउ करूछंती हैला तो एटा बहुत दिन लागि जाय एटी देछि ना लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एटा बहुत दिन लागि जाय कंसोलिडेशन भी होछि ड्रेन भी होछि एटा बहुत समय लागि जाय एटा होछि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर पई करा जाय मन रखिबो कंसोलिडेशन ड्रेन टेस्ट इज फॉर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ଆଜ୍ଞା आई होप किछि क्लैरिटी आसीदिबो ऑप्शन डी 40 40 कोचे पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग एमान भितरु कोटा करेक्ट स्टेटमेंट कहबो Option A, sir. ऑप्शन एफ ए अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट अनकन्फाइंड कंप्रेशन चेन माने QU is equal to 2C in case of clay. An unconfined compression test is special case of a triaxial compression test. तो ऑप्शन ए टा ही ठीक अछि अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्टेट माने बाहर कोनसी कन्फाइनिंग प्रेशर पडू नाही सी बा कोएशन इज इक्वल टू अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बाय 2 अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ एठे में मेजर करबा अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ इज ए स्पेशल टाइप केस ऑफ ट्राइएक्सियल टेस्ट ऑप्शन ए A combined footing may be rectangular in shape if rectangular माने जदि equal load पडुची trapezoidal माने जदि unequal load पडिबो both the columns carry equal load जदि trapezoidal देथांदा then unequal load हेतांदा ऑप्शन 8 हेतांदा सेठी हेजो ऑप्शन सी तो contact pressure distribution under a rigid footing यार ट्रिक्स कहथली मने अछि हमर क्ले फ्लेक्सिबल हसिबो सैंड रिजिड हसिबो आ बाकी सब खाली तार रिवर्स कर दबो माने क्ले अछि हैला क्ले अछि क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट रिजिड फुटिंग क्ले रिजिड कोन होबो कांदीबो क्ले रिजिड कांदीबो एटा हे जिवो क्ले रिजिड से भली सैंड रिजिड कोन होबो हसिबो एटा हे जिवो सैंड रिजिड हे गला तो प्रेशर ताले कोन वेरी करछि देखो 0 at edges contact and pressure maximum at center. 0 at Option B. edges poisonless soil देछि त माने sand देछि sand माने 0 at edges maximum at center option B 43 two horizontal plates are placed 2 centimeter apart dita horizontal plate अछि 2 centimeter apart the space between them being filled with oil गुटा oil ले fill हेछि जार viscosity देछि 10 poise माने क्वेश्चन रे तुमको viscosity देछि 10 poise माने कोन 10 poise माने dyne second per centimeter square by 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर हे जिवो by 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर हे गला विस्कोसिटी दे देला आउ डिस्टेंस तुमको दे देछि देन कोन कोछि वेलोसिटी देछि 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दे देला 2 मीटर पर सेकंड शियर स्ट्रेस केते पचाउछि अप्लाई करि परबा न्यूटन्स लॉ ऑफ द विस्कोसिटी माने शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल इनटू du अपन dy शियर स्ट्रेस क्वेश्चन ले पचारछि म्यू होछि विस्कोसिटी 1 देछि du माने चेंज ऑफ द वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी केते 2 इनिशियल होछि 0 तो सेही 2 ही रहला डिवाइडेड बाय y डिस्टेंस केते देछि 2 सेंटीमीटर देछि 2 सेंटीमीटर को मीटर कले 0.02 मीटर दिस इज योर आंसर 100 ऑप्शन बी तो फ्लूइड को यदि थरे भी पढिथिबो ए क्वेश्चन करि परिबो कारण न्यूटन्स लॉ ऑफ द विस्कोसिटी होछि बेसिक फॉर्मूला सब if 90% volume of iceberg 90% in the water and only 10% volume above
तार टोटाल वॉल्यूम जदि V हुए आइसबर्ग रो 0.9 V बुड़ी के अछि 0.1 V टा ऊपर को देखा जाउछ व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द आइसबर्ग द डेंसिटी ऑफ द सी वाटर इज गिवन बाय डेंसिटी ऑफ द सी वाटर क्वेश्चन ले दे देछि हैला हमें कोन करिया वॉल्यूम को इक्वल कर दवा वॉल्यूम को इक्वल कर दवा बा वेट को इक्वल कर दवा डेंसिटी इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम ताले वेट जेति की तमरो वेट जो वॉल्यूम तमरो आइसबर्ग बुड़ी की रही से किसी ना किसी पानी को डिस्प्लेस करथिबो तो यार वेट पानी रो वेट सहित समान हो जिवो दैट इज योर बॉयंस फोर्स जोटा कोंती ताले वेट इज इक्वल टू गामा इनटू वॉल्यूम ताले टोटल वॉल्यूम इनटू गामा ऑफ कहार टोटल वॉल्यूम इनटू गामा गामा ऑफ कहार टोटल वॉल्यूम आइसबर्ग रो गामा इक्वल टू केजी पर मीटर क्यू दे देछि डेंसिटी पचाछि ताले डेंसिटी फॉर्मूला लिखिबो टोटल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी 9.81 इक्वल टू 0.9 वॉल्यूम जोटा बुड़ी के अछि इनटू कोथरे समुद्र पानी रे बुड़ी के अछि समुद्र पानी रो डेंसिटी क्वेश्चन देछि 1025 इनटू 9.81 9.81 कटि गला ताले डेंसिटी ऑफ द आइसबर्ग केते पचाछि v कटि गला डेंसिटी ऑफ द आइसबर्ग होची 0.9 इनटू 1025 होची आंसर केते बाछि Option B, sir. ऑप्शन बी 922.5 45 which of the following is used to measure the difference in pressure between 2 points of a in a pipe or in two different pipes or in two different pipes ताको हम कोन कहबे Differential differential manometer option A differential manometer the loss of head in pipe due to friction is calculated by HF is equal to FL V square by 2G T by FL Q square by 12.1 into D to the power 5 এটা হচ্ছে কার ইকুয়েশন ডার্সি ওয়েসবাচ ইকুয়েশন सर এটা ফ্রিকশন হেড কোটা ऑरिफिस मीटर ऑरिफिस मीटर का पे डिस्चार्ज पे सेंचुरी मीटर ऑरिफिस मीटर ये सब का पे डिस्चार्ज पे करेंट मीटर का पे वेलोसिटी पे पीजियोमीटर ऑरिफिस मीटर और पिजोमीटर का पे प्रेशर पे absolute पिजोमीटर प्रेशर पे सेंचुरी मीटर वेलो हमर डिस्चार्ज करेंट मीटर वेलोसिटी पीटर ट्यूब क्वेश्चन में पठला इथरो पीटर ट्यूब का कोन पे फर्स्ट क्वेश्चन पठले पीटर ट्यूब का पे velocity of flow वेलोसिटी फर्स्ट क्वेश्चन पठला इथरो 47 ହେଲା बेसी बेसी क्वेश्चन पड़छ पूर्व तर भी पिला माने पढ़ातले सर फ्लूइड पढ़िबो की फ्लूइड छाडी गले हबो की किछि छाडी की जीवन एबे तो तम पाखे टाइम अछि इवन इफ स्टील भी छाडी की जीवन फ्लूइड स्टील सबो सब्जेक्ट देखि की जीवो कोठु इजी क्वेश्चन आसी जीवो कोठु हार्ड क्वेश्चन आसी जीवो यू नेवर 47 a concrete or masonry structure placed in an open channel over which the flow occurs is called जहाँ ऊपर देखि फ्लो जाय ताको हमें कहबा ओयर बैरेज माने गोटे टेम्पररी स्ट्रक्चर जोथरे गेट लागि थाए किंतु ओयर रे गेट लागि न what will be the coefficient of discharge CD पचाची if the theoretical discharge of a pump is एतिकी actual coefficient of the discharge कहा को कहबा actual by theoretical I can say 0.8. actual by theoretical क्वेश्चन दे देछि actual होछि केते दे देछि लीटर पर सेकंड माने 20 20 by 25 होछि आंसर वेंचुरी मीटर रे सीडी रो वैल्यू केते इन वेंचुरी मीटर व्हाट इज द 95 0.95 को लेके 0.98 again अब भीतर कुछ भी आस पारे Harlick machine which of the following turbine is suitable to generate a power of
10,000 हॉर्स पावर 1 हॉर्स पावर जे केते वाट 746 working at 746 watt working at a speed of speed तुमको दे दीजिए 500 rpm rate per minute under a head of 81 meter क्वेश्चन ले कौन पचाचे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टरबाइन इज सुइटेबल अच्छा को टरबाइन टा सुइटेबल तो फास्ट आगे कौन बाहर करिवो स्पेसिफिक स्पीड बाहर करिवो क्वेश्चन तुमको पावर देछि एन देछि एस देछि आगे स्पेसिफिक स्पीड बाहर कर दियो n into p रो रूट ओवर बाय h टू द पावर 5/4 n देछि केते 500 into पावर देछि 10,000 रो रूट ओवर बाय 81 टू द पावर 5/4 एको सॉल्व कर केते आछी 205.76. 205.76 205.76 ହେଲା 205.76 होची कोन तमर आसला स्पेसिफिक स्पीड तो हम पाखरे केते प्रकार हम टावर जो फ्लो कंडीशन देखिबा केते प्रकार फ्लो कंडीशन अछि गोटे होची टांजेंशियल आउट होची रेडियल another one is your axial तो टांजेंशियल टा होची कोन गोटे इंपल्स टरबाइन रेडियल टा होची रिएक्शन टरबाइन एक्सियल टा होची रिएक्शन टरबाइन जहार टांजेंशियल रो स्पेसिफिक स्पीड बहुत अल्प थाए 0 रु नै कि 60 आरपीएम रेडियल रो 60 रु नै कि 300 एक्सियल रो 600 रु अधिक आउ 600 रु 1000 ताले क्वेश्चन ले कोन आसला एठी 205.76 आसला ताले एटा को कैटेगरी जाउची रेडियल ले जाउची आ रेडियल होची गोटे को टरबाइन फ्रांसिस टरबाइन टांजेंशियल टा होची कोन पेल्टन व्हील टरबाइन रेडियल टा होची फ्रांसिस टरबाइन एक्सियल टा होची काप्लन टरबाइन तो फ्रांसिस रो स्पीड होची केते 60 रु नै कि 300 हमर आसला केते 205 तो एटा हेजिवो फ्रांसिस टरबाइन सिलेबस रे तो टरबाइन दे खाली पंप कर देछि सिलेबस तो किछि देइनी सिलेबस जदि देइनी देन ए वैल्यू पड़ता कि नै 2πn/60 2000 जो 1008 पोस्ट वाला 1008 पोस्ट रो क्वेश्चन देखि जंदी स्पेसिफिक स्पीड पचातला देखि जंदी कि नै 1008 जो पोस्ट ला 933 जोडा एथर थला पूर्व थरोडा 1008 थला सेठी ए क्वेश्चन टा पड़थिला जोडा कैंसल हेसला परे 2πn/60 तो 2πn/60 एटा कोड आसला स्पीड ऑफ द पंप एटा होचे कोन एंगुलर स्पीड 2πn/60 यार ऊपर क्वेश्चन पचारितला सिलेबस रे सब किछि माने एमिति जो एथर भी जो क्वेश्चन पड़ितला 4-5टा क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस थिला गोटे क्वेश्चन तमर पड़ितला जो 1008 जो पोस्ट थिला सेटा क्वेश्चन पड़ितला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट एटा अछि सिलेबस रे एमिति तो कहि होबनी किछि स्पेसिफिक अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम पैटर्न गोटे स्पेसिफिक सिलेबस तो फास्ट तुम सारिबो ता सहित एक्स्ट्रा क्वेश्चन किछि गोटे एवरी मॉक टेस्ट रे गोटे दिटा एक्स्ट्रा क्वेश्चन करिके रखिथिबो जेमिति हॉलिंग कैपेसिटी ऑफ द ट्रैक्टर मशीन वाला क्वेश्चन एडवांस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट तो क्वेश्चन आसुनी बट पडिबो क्वेश्चन गोटे दिटा क्वेश्चन आसी मैनेजमेंट ऊपर भी क्वेश्चन पचाउछि मैनेजमेंट जेमिति तमरो अछि खाली सीपीएम पड बट क्वेश्चन पचाउछि मैनेजमेंट ऊपर गोटे दिटा क्वेश्चन तो एमिति सबले रहइबो ता पय ओरिडबा दरकार नै देखो ये जो टरबाइन वाला क्वेश्चन अछि एथिरा खाली कोन करिवो गोटे टेबल अछि जे टांजेंशियल कोटा रेडियल कोटा एक्सियल कोटा ताको खाली थरे खाली देखि दबो क्वेश्चन थ्रू देखि दबो जोडा फास्ट रे निजर बेसिक सिलेबस कवर हे गला तापर जो एक्स्ट्रा जिंसोडा रहइला ताको क्वेश्चन थ्रू नुवा नुवा जिंस कोन करिवो शॉर्ट नोट्स से ऐड करि करि चलिबो तो जदि भी किछि जिंस तुम लागो सिलेबस रे नाही कि मु मते पढिया पडियो तो नुवा जिंस एबे किछि स्टार्ट करनी
खाली मॉक टेस्ट थ्रू ताको शॉर्ट नोट्स रे खाली ऐड करी करी चलो 2 पाई n by 60 कि ओमेगा इनटू n कि हॉलिंग कैपेसिटी ऑफ द ट्रैक्टर ये सब जो जिनसोडा खाली ऐड करी करी चलिबो एक्स्ट्रा जिनसोडा शॉर्ट नोट्स रे जो भी तुम नोट्स दिबो 50 रेनफॉल हिटोग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ कौन शो करे रेनफॉल हिटोग्राफ Intensity with रेनफॉल time. इंटेंसिटी विथ टाइम रेनफॉल इंटेंसिटी विथ टाइम Time. 51 which of the following is not a type of loss from precipitation एମାନଙ୍କ भितरु कोटा precipitation लो loss नुहे Water set precipitation माने वर्षा हवा water set कोटा leakage. water Water set set leakage leakage. 52 the water application efficiency does not depend upon कहा ऊपर depend करे नहीं water application efficiency Geometry of the conveyance system. geometry of the conveyance system कहा ऊपर depend करिवो method of the application ऊपर depend करिवो types of the soil ऊपर depend करिवो और climatic condition ऊपर depend करिवो Condition. आज्ञा. 53 the strain energy stored in a body with shutdown load application गोटे होची shutdown load आउट होची gradual load stress induced is twice the stress induced केते बड़े stress हमर जो induce हेता है stress is equal to load per area जेतले एटा को केस रे gradual load जदि shutdown load application होला then stress ता कोन हे जिवो 2p by a in case of the shutdown application of the load तले को आंसर होबो Option B. option b the same load is applied by an impact A habo question ले sir. कहूची the strain energy stored in a body with shutdown load application the maximum stress induced is twice the stress induced when माने shutdown load apply हेइची shutdown load apply हेइची the maximum stress induced is twice the stress माने shutdown load रे जो stress टा सेटा को stress रो द्विगुणा gradual रो नहीं क्वेश्चन टा तमाने पढ़ी के डिकोड करि परलन क्वेश्चन कहिची आमे नॉर्मली जानछनी जदी ग्रेजुअल लोड पडुची p by a जदी शटडाउन लोड पडुची 2p by a एटा होची का पई एटा होची शटडाउन पई एटा होची ग्रेजुअल पई तो क्वेश्चन ले कहूची जे शटडाउन टा ग्रेजुअल लो केते गुणा बा शटडाउन टा दी गुणा ऑफ कहारो दी गुणा ऑफ कहारो ग्रेजुअल अरे ये आंसर होगा. a होबो आंसर the ratio of the total elongation of the bar of uniform cross section produced under its own weight माने WL upon 2AE बा gamma L square by 2E to elongation produced by an external load हेले कोन जो PL upon AE तार रेशियो पचाज WL upon 2AE by PL upon AE रो रेशियो केते पचाज केते हो रेशियो जदी P टा W रो बराबर हुए ये तो कटि गला 1/2. 1/2 ऑप्शन सी a beam is said to be dash if one end or both the end of the beam project beyond the supports easy question overhang Overhanging. ratio of the reactions of RA RB reaction केमिति बाहर करबा summation of the horizontal force 0 summation of the vertical force 0 फास्ट आगे horizontal force को 0 करबा vertical force को 0 करबा तापरे कोन करबा मोमेंट नबा horizontal फास्ट vertical force को 0 करो horizontal तो किछि नाही माने RA plus RB equal to कहार बराबर हबो 5 टन प्लस 3 टन प्लस एटा केते पडुची 2 टन पर मीटर केते डिस्टेंस से पडुची 2 रे प्लस 4 टन तले RA प्लस RB RA प्लस RB हे गला 5 3 8 4 12 12 टन हे गला गोटे इक्वेशन पाइले RA प्लस RB होची
12 टन से पचारे रेशियो ऑफ द रिएक्शन आरए बाय आरबी केते पचारे नेक्स्ट नबा समेशन ऑफ द मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू 0 ताले आरबी इनटू 2 2 4 2 6 2 8 8 एटा पड़छि कटा आ बाकी सब तार अपोजिट डायरेक्शन रे मोमेंट क्रिएट करिवे इक्वल टू हो जिवो 5 into 2 ए 5 पई केते आसीबो 5 into 2 प्लस एटा केते आसीबो 2 टन पर मीटर पड़िबो सेंटर रे पड़िबो माने केते 2 into 2 4 पड़िबो सेंटर रे सेंटर माने केते डिस्टेंस 2 2 4 एगे 5 तो माने 4 into 5 प्लस 3 into 6 ताले तो आरबी पाई जिवो 48 by 8 आरबी भारी गला 6 आरबी यदि 6 होला देन आरए केते हे जिवो आरए भी 6 ताले रेशियो केते हे गला 1 ये जिंस बेसिक क्वेश्चन रिएक्शन बाहर करियो ये या उपरु एसएफडी बीएमडी आगे फार रिएक्शन बाहर करियो देन जाके एसएफडी बीएमडी खोजियो रिएक्शन काढिबा समस्त करि पड़छो कि नहीं रिएक्शन बाहर करियो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स 0 समेशन ऑफ मोमेंट 0 ना काल किछ असुविधा होछ कोन ला तो कटो सर यूटीएल टा काल यूडीएल ला कोठी पडिची 2 मीटर रे पडिची केते पडिची 2 मीटर डिस्टेंस से पडिची 2 टन पर मीटर रे पडिची तो आमे फास्ट जानि छथि कोन एटा होची यूडीएल सेही फिगर टा को बाहर कोनची एउठते कि डिस्टेंस होची 2 मीटर केते पडुची 2 टन पर मीटर रे पडुची आमे जदि जानि छथि यूडीएल को जदि पॉइंट लोड रे कन्वर्ट करिबा ताले कोन करिबा पर मीटर रे 2 ताले 2 मीटर रे केते पडिबो 4 टन ताले यूडीएल हटि गला यूडीएल को पॉइंट लोड रे कन्वर्ट कर देले ताले यूडीएल को हम कोन करले पॉइंट लोड रे कन्वर्ट कर देले कोठी पडिबो 4 टन रो लोड पडुची कोठी पडला ताले ए पॉइंट रु 2 2 4 आ एठुती केते हबो 1 सेंटर रे पडिबो तो 4 into 5 हे गला आ ए लोड इनटू दिस डिस्टेंस केते 5 into 2 3 टन into this distance 2 2 4 2 6 3 into 6 RB into this distance 8 क्लियर से भली जदी एठी यूडीएल न थाई कोन थांदा यूवीएल थांदा देन कोन करथांदे सपोज ए टाइप ऑफ फिगर थांदा आ एटा देथांदा 2 टन पर मीटर टू होते कि 2 मीटर यूवीएल देथांदा देन कोन करथांदे एरिया ऑफ द डायग्राम एरिया ऑफ डायग्राम केते हाफ इनटू ट्रायंगल अछि हाफ इनटू बेस इनटू हाइट 2 पड़थांदा लोड 2 कोठी पड़थांदा सीजी रे पड़थांदा आ सीजी टा केते डिस्टेंस से पड़िबो एपोर्ट रो h/3 एपोर्ट रो 2h/3 जहां भी दबो काढी परिबो बेसिक जदी क्लियर अछि तो 4 into 5 केन हो एटा 4 into 5 केमति हबो कटि होला सेंटर रे पड़ले कि नहीं जदि हम कन्वर्ट करले यूडीएल को पॉइंट लोड रे तले कोठी पडुची एउठती जदि टोटल टा 2 हुए तले एउठती केते हबो 1 हेलेटा केते हला 2 2 4 तले टोटल टा केते हला 5 हला कि नहीं Into तले nine. 4 टन into 5 सेंटर रे पड़िबो ना यूडीएल कन्वर्ट करले यूडीएल को पॉइंट लोड क्लियर हाउ का दिस डाउट नेक्स्ट जुआ 57 according to the bending equation the cross sectional beam strength mainly depends on cross sectional beam strength का पे डिपेंड करिवो सेक्शन मॉडुलस सेक्शन z मॉडुलस ऊपर डिपेंड करिवो i upon y सेक्शन मॉडुलस जा जते अधिका रिजर्व स्ट्रेंथ तार सते अधिका 58 when direct stress is greater than bending stress then there will be and direct stress टा bending stress to अधिका ताले हेटी कोन हबो कंप्रेशन हबो डायरेक्ट स्ट्रेस जो अधिका हला डिग्री ऑफ द डीएस पचाची रिजिड जॉइंटेड स्पेस फ्रेम देइची स्पेस फ्रेम केस से कोन हबो 6m हे जिवो 6m plus r minus 6 6m plus r minus 6j
3m plus r minus 3j ହେଇथा और 2d 3m ଦେଇଥାନ୍ତା degree of indeterminacy of the following beam for general case indeterminacy ଦେଇଛି ଏଟା କେତେ ହେଇଯିବ 3 3 support 2 2 ତାହେଲେ re କେତେ ହେଇଗଲା external reaction 3 2 5 2 7 ହେଇଗଲା total external reaction ତାହେଲେ DAC କେତେ ପାଇଯିବ re minus 3 4 ପାଇଗଲ DAC ବର୍ତ୍ତମାନ DSI କେତେ ହେବ 3C minus RR 3 into number of the loop केते 0 minus RR केते गोटे internal hinge अछि summation of m minus 1 ताले 0 minus of केतेटा member joint अछंती 3टा member joint अछंती 2 minus 1 that is your minus 1 ताले DSE हेतिला केते 4 DSI हला minus 1 तो 4 minus 1 केते हो आंसर 3 हला जीए जो मेथड फॉलो करछो सेही मेथड रे ही जीवो ये डायरेक्ट फॉर्मूला पके बाहर करथिबो पीसी माइनस आर को फॉलो करू नथिबो जे जोटा करछो सेटा फॉलो करियो आंसर किनु सेम आसी सबुते फाइंड आउट द स्टैटिक indeterminacy of the beam in the following स्टैटिक indeterminacy पचाछि 3 3 6 जेमिति कले एटा सेमिति कर परिबा 3 3 6 इंटरनल हिंज अछि 6 रु 3 गला केते 3 इंटरनल हिंज पय आसीबो -1 3 रु 1 गला केते 2 हे जीवन छै KI स्टिफनेस देछि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर पचाछि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर्मूला कोन जे कोनसी मेंबर हमें काढिबा देन स्टिफनेस ऑफ दैट मेंबर डिवाइडेड बाय टोटल स्टिफनेस ऑफ द जॉइंट सपोज एटी जॉइंट रे चारटा मेंबर अछंती तो हमें बाहर करबा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ दिस मेंबर ताले सपोज एटा x ताले स्टिफनेस ऑफ x डिवाइडेड बाय टोटल स्टिफनेस ऑफ दिस जॉइंट ताको हम कहबा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बा KI divided by summation of the KI option D Castigliano's first theorem is applicable to which structure Castigliano's first theorem कहाँ पे applicable elastic ना inelastic material Castigliano's first theorem कौन था Elastically. when system behaves elastically option B. B Castigliano's first theorem कौन था सिस्टम behaves elastically ता पई तो applicable Castigliano's first theorem कौन थिला सेकंड theorem कौन थिला चलो तुम पई काम थोड़ा थोड़ा कोई साइड ऑलरेडी del u upon del जो स्ट्रेन एनर्जी रिलेटेड रिलेशन कहथली del u upon del p del u upon del m गोटे होची डेल्टा गोटे होची थीटा partial derivative of the total internal energy in a structure with respect to force जे कौन से पॉइंट यदि हम अप्लाई करबा का सहित समान हबो डिफ्लेक्शन सहित समान हबो एटा होची कास्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम शॉर्ट नोट्स एटलीस्ट जो जिनसोडा वीकनेस रहउची ताको शॉर्ट नोट्स रे लेखो जे कास्टिग्लियानोस फर्स्ट थ्योरम सेकंड थ्योरम भीतर सब बडे क्वेश्चन पाउजो तो ताको लेखि के रखो फर्स्ट थ्योरम एटा सेकंड थ्योरम एटा The primary unit of a truss is Triangle. Parallel. truss माने सबले ट्रायंगल Triangle. truss माने सबले ट्रायंगल In the analysis of a plane frame, the stiffness factor at a joint is taken equal to sum of stiffness factors the members connected to a joint by using जो k by summation of the ki कले तो सेटा को principle of the superposition the cover of longitudinal reinforcing bar in a beam subjected to sea water spray रे cover केते पचाउछ 70. 70
67. According to IS 456, if the maximum aggregate size is increased from 20 to 40, the minimum cement content required changes. Cement content केते तमे adjustment करिवो जदि 20 रु 40 जाउची तले केते बढ़ुची 40 20 mm रु 40 mm को जाउची जदि nominal maximum size of the aggregate जदि 10 mm रहिला then plus 40 10 mm पाई 20 mm पाई 0 40 mm पाई -30 तो 20 रु केते हो जे 40 हो माने 40 mm तले कोन हो जिवो -30 -30 minimum cement content for aggregates other than 20 mm हेले 20 mm हेले केते 0 ता पई कोनोसी minimum cement content रो adjustment दरकार नै किंतु 10 mm हेले +40 40 mm हेले -30 एति खाली मन रखिबो 20 पई किछि दरकार नै 10 mm हेले +40 40 mm हेले 40 -30 ଆଜ୍ଞା 68 approximate ratio of direct tensile strength to characteristic tensile strength direct tensile strength माने केते 1/10th of the compressive strength that is your characteristic strength केते जो आंसर 1/10 0.1 0.10 0.10 10 by 100 1/10 option D 69 the characteristics load means characteristics load हमें कहा कहबा characteristics load कहा कहबा 95% load probability. at which 95% probability of not being exceeded during the lifetime of the structure but not expected to fall more than 5%. वो ऑप्शन दे देखो A B. ऑप्शन ए देछि below which not more than 5% of the test results are expected to fall ऑप्शन ए भी ठीक होछि ऑप्शन बी कहूछि which has a 95% probability of not being exceeded during ऑप्शन बी भी ठीक होछि ऑप्शन ए ऑप्शन बी सर दीटा ऑप्शन भितर एटा गोटे तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ना कहूची तो ऑप्शन एटी कैरेक्टरिस्टिक्स लोड देची अच्छा characteristics load देछि then 95% which has a 95% probability of not being exceeded during the life of the structure then option B strength ଦେଇଥିଲେ first option ହେଇଥାନ୍ତା below A which not more than 5% of the test result expected to fall very good 70 सर आउथर बुझो ना गोटे होचे characteristic strength आउट होचे characteristics load सबोले कोन करिवो मटेरियल स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट करिवो आउ लोड को कोन करिवो ओवर एस्टिमेट करिवो हैला फास्ट स्ट्रेंथ केस रे जदि हमर गोटे मटेरियल स्ट्रेंथ चेक करचंती सपोज हम पाखरे 100 टा सैंपल अछि 100 टा सैंपल रु हमें ताको एवरेज स्ट्रेंथ भाला सपोज 90 भाला स्ट्रेंथ 90 भाला एक मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ भाला 90 तामाने 90 पर्यंत ये लोड कोन करिवो 90 पर्यंत ये सही परिवो 90 पर्यंत ये सही परिवो किंतु जदि 100 टा सैंपल हमें नौचंती ता ऊपर हमें 90 90 लोड दौचंती सपोज 89 कि 90 भीतर हमें लोड को रखुचंती देन 5 रु अधिका मटेरियल्स फेल होबा कथा नुहे कारण तार स्ट्रेंथ होउची केते 90 होउची तार स्ट्रेंथ सेटा से फास्ट स्टेटमेंट रे कहूची below which जदि हमें लोड अप्लाई करचंती नॉट मोर देन 5% 5 रु अधिका स्पेसिमेन फेल होबा कथा नुहे ता माने ऑप्शन ए इज रिलेटेड टू कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ तापर कहूची ऑप्शन बी कहूची which लोड हमु कहूची which has a 95% probability of not being exceeded during the life of the structure ता माने आमे गोटे लोड को जो हमें ओवर एस्टिमेट करूचंती जो कैरेक्टरिस्टिक्स लोड हमें नौचंती 1.5 मल्टीप्लाई करी की ता माने होची कोन जे 95% चांसेस अछि एई लोड हिसाब रे जदि हमें डिजाइन करबा देन ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर या टू केबे भी एक्सीड करिवो नै बुझि पालो दीटा भीतर डिफरेंस
स्ट्रेंथ होची अंडर एस्टिमेट करिवो लोड को ओवर एस्टिमेट करिवो आमे जो कैरेक्टरिस्टिक लोड केमिति बाहर करंती 1.5 मल्टीप्लाई करी बाहर करंती तो सेटा होची जो 1.5 मल्टीप्लाई करिवा सपोज ए लोड आसुची 100 मु कोन कली 1.5 मल्टीप्लाई करी कि 150 नै के डिजाइन कली ता माने ड्यूरिंग द लाइफ स्पान ऑफ द स्ट्रक्चर केबे भी 150 को एक्सीड करिवो नाही 95% चांस अछि of not being exceeded during the life of structure बुझा पड़ला दिरा भीतर डिफरेंस गोटे होचे लोड पई कहूची आउटे होचे स्ट्रेंथ पई कहूची 70 डायरेक्ट खाली इक्वेशन पचाछि को इक्वेशन हो गुप्ता क्वेश्चन ऑप्शन ए सर vu plus 1.6 tu upon b ऑप्शन ए 71 in which condition a doubly reinforced beam used को कंडीशन ले हमें doubly reinforced beam को यूज करियो doubly reinforced beam हमें को कैसे यूज करिवा जदी हम पाखरे रेस्ट्रिक्शन थिबो जेहेतु हमको अकॉर्डिंग टू हमर मूवमेंट बा लोड कैरिंग कैपेसिटी जदी हमको विड्थ थाउ डेप्थ बा साइज ऑफ द बीम छोटो पडुथबो से केस रे अधिका लोड कैरी करिया पे हमें कोन यूज करिवा डबल रेनफोर्स सेक्शन when depth and breadth of the beam have to be restricted option b where the tension steel is provided in a two-way slab रे tension कोड प्रोवाइड करा जाय टॉप एंड बॉटम top and bottom one way slab का कहबा two way slab का कहबा जदी L by B greater than 2 होला ताको हम कोन कहबा one way ना two way वन वे सर one way less than 2 hele टू 2 वे Two. 73 effective length of the column whose end are one end is fixed and other end is fixed 12 दीटा एंड फिक्स थिले 0.5 L गोटे एंड फिक्स्ड गोटे एंड हिंज थिले 0.65 L determine the plane area of a footing carrying a load पडुछि केते 15000 kilonewton from 300 mm square column containing 20 mm diameter of the bars diameter देछि 20 mm area दे देला 300 mm ओटा 300 mm square column अछि square column अछि diameter दे देला load केते पडुछि दे देला shape bearing capacity of the soil देछि 120 kilonewton per meter square then area केमिति बाहर कर जाय पचाछि एरिया खाली कोन करबा टोटल लोड रे हरि दबा टोटल लोड पडुछि लोड बाय 15000 बेयरिंग कैपेसिटी 1500 kilonewton बाई एसबीसी अछि 120 kilonewton per meter square खाली हरि दियो केते आछि 12.5 12.5 meter square load on connection is not eccentric for को केस eccentric होबनी डबल कवर बट जॉइंट रे एसेंट्रिसिटी आसीबो नाही ऊपर गोटे कवर प्लेट लगेबा तळे गोटे कवर प्लेट लगेबा लोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होबो तो एसेंट्रिसिटी आसीबो नाही a fillet weld is not recommended if the angle between the fusion faces is लेस देन 60 less than 60 degree 77 by which one of the following method is an appropriate quick solution possible for frames subjected to transverse load देखियो कौन कौन ऑप्शन है से कोचे को मेथड एमान भितरु को मेथड होच गोटे एप्रोप्रिएट क्विक सॉल्यूशन कहा पई फ्रेम्स पई जहा ऊपर कोन पडुचे ट्रांसवर्स लोड पडुचे ट्रांसवर्स लोड्स माने वर्टिकल लोड पडुचे
को मेथड फॉलो करिवो शियर फोर्स ट्रांसवर्स लोड माने कोन शियर फोर्स बा जो भी मोमेंट डेवलप हो तमरो बीम हो किबा कॉलम हो फ्रेम स्ट्रक्चर देछि बीम हो किबा कॉलम हो सेते जो लैटरल लोड पडुछि सेति पे हमें को मेथड फॉलो करिवा कैंटिलीवर पोर्टल मेथड कैंटिलीवर पोर्टल मेथड एको रखिबो शॉर्ट नोट्स रे न्यू क्वेश्चन एको रखिबो शॉर्ट नोट्स रे तापरटा स्टील पार्ट रू से कोची सिंगल एंगल जदी अछि देन 3a1 by 3a1 plus a2 आ जदी एंगल्स कनेक्टेड अछंती बैक टू बैक सेम साइड ऑफ द गसेट प्लेट ताले 5a1 by 5a1 plus a2 तो एठी ऑप्शन देछि कोन बैक टू बैक टू एंगल्स ताले आंसर कोन हेजिबो 5a1 by 5a1 plus a2 और खाली जदी सिंगल देथांदा सिंगल एंगल then 3a1 by 3a1 plus a2 तो एठी जो बैक टू बैक देछि डबल एंगल सेटा हो जिवो 5a1 by ऑप्शन डी इफेक्टिव लेंथ पचारछि कंप्रेशन मेंबर वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री दी थर क्वेश्चन देला वन एंड इज फिक्स्ड अदर एंड इज फ्री 2l 80 spacing of the vertical stiffener in plate girder रे vertical stiffener रो spacing केते not more than 1.5 d आउ 0.33 d रु सानो होबा कथा नहीं spacing of stiffener कोठी प्रोवाइड करियो d by tw less than 85 हेले नो stiffener 85 रो 200 हेले गोटे vertical stiffener प्रोवाइड करियो not पड़ोला not greater than 1.5 d not less than 0.33 d शॉर्ट नोट से रहियो expected project duration generally follows which path project duration को path को follow करे जदि each activity को देखिबो then activity follow beta distribution कर but जदि total project को देखिबो project follow normal distribution कर activity follow beta distribution कर the area under beta distribution curve is divided into two equal parts by जो center part को हमें कौन कहबे दीटा equal part center part को हमें कौन कहबे expected time te that is your te जोटा है center part te is equal to t naught plus 4tm plus tp by 6 t naught होची optimistic time tm होची most likely time tp होची pessimistic time 82 83 कोचे the technique for establishing and maintaining priorities among various jobs of a project एको हमें कौन कोनथि को काम को हमें फर्स्ट प्रायोरिटी दबा का को हमें परे प्रायोरिटी दबा तो एको हमें कौन कोनथि इवेंट फ्लो शेड्यूलिंग ना शॉर्ट इंटरवल शेड्यूलिंग ना क्रिटिकल रेशियो शेड्यूलिंग ना स्लॉटिंग टेक्निक तो ये टेक्निक को हमें कोनथि क्रिटिकल रेशियो शेड्यूलिंग कारण क्रिटिकल एक्टिविटी रे हम जानि परबा को काम को हमें अधिका इंपोर्टेंस दबा 84 it is noted that casting of column starter गोटे कॉलम को कास्ट करबा takes not less than 6 minutes and takes sometimes 45 minutes but 15 minutes is more frequent माने क्वेश्चन तुमको तीनटा टाइम ड्यूरेशन दे देला सबुटो सानो होउची कोन ऑप्टिमिस्टिक हैला सबुटो जे बड़ होउची पेसिमिस्टिक आ जे मझा मझे होला सी होउची मोस्ट लाइकली टाइम ताले 6 plus 4 into 15 plus 45 divided by 6 हेजबो आंसर expected time हेजबो 18.5 minute which of the following is considered as outgoing in expenses खर्च रे एमान भितरु कोटा होची outgoing repair sinking fund loss of
रेंट कोटा होची आउटगोइंग 85 which of the following is considered as outgoing in expenses रिपेयर भी होची कोन गोटे आउटगोइंग जो माने कोटा होची तमरो खर्च खर्च रे सब किए जीवो टैक्स दबा हैला टैक्स दबा रिपेयर करबा मैनेजमेंट कलेक्शन करबा सिंकिंग फंड हे गला लॉस ऑफ द रेंट जोडा सिंकिंग फंड हे गला मिसलेनियस रे जीवो तो माने रिपेयर सिंकिंग फंड लॉस ऑफ रेंट सब कोथे जीवो आउटगोइंग एक्सपेंसेस ऑप्शन डी लॉस ऑफ रेंट बोले लॉस ऑफ रेंट माने होची तमर जो भड़ा जो घरे देइचो ହେଲା जो घर तमे भड़ा देइचो घर जेतले खाली पड़ला माने सपोज भड़ा वाला पळेले तमे ओएलएक्स ऐड देइचो घर वाला पळेले बर्तमान 2-3 मास जो घर खाली पड़ला सेटा तम लॉस ऑफ द रेंट हैला कि नहीं तो सेही 3 मास तमे भड़ा पाइथानो जोटा कि मिललानी ହେଲା किंतु जदि से घरे कोनोसी लाइट फाइट अछि बाहर लाइट जला होउची कि पानी कनेक्शन तो बंद होबनी पानी चार्ज पडुची तो सेटा सब तमरो लॉस हैला कि नहीं भड़ा वाला तो रहउना लॉस ऑफ रेंट 86 the most reliable estimate कोटा Detailed. detailed estimate हो सबुठु most reliable estimate which of the following is an on metal road एमान भितरु कोटा होची गोटे on metal road Then road. on metal road माने कोन आर्थेन रोड सिंपल माटी रास्ता compensation of gradient 30 plus r by r or 75 r whichever is minimum मिनिमम 89 the amount of camber provided in highway surface located in an area having light rainfall 1 in 60 1 in 60 टा होचे कहार 1 in 60 into 100 कर दियो 6 by 10 केते परसेंटेज होचेडा 1.7% 1.7% टा कहार कोड स्टार्ट करिवो सीरियली फास्ट मन रखिवो 2% 1.7% गोटे होची हेवी रेनफॉल लाइट रेनफॉल तापर जहां भी थिवो ताको डायगोनली आनिबो 2.5% 2% अगेन 2.5 एठी आसीबो 3% 2.5% अगेन 3 एठी आसीबो 4% 3% सबुठु भलो रोड स्टार्ट करिवो सीमेंट कंक्रीट बा हाई बिटुमिनस सरफेस 2% 1.7% तापर आसीबो थिन बिटुमिनस सरफेस 2.5% 2% तापर आसीबो वाटर बाउंड मेकाडम बा ग्रेवल रोड 1 in 33 बा 3% 2.5% तापर आसीबो लास्ट आर्थेन रोड 4% 3% तले क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट 1 in 60 माने 1.7% एटा होची कहा पई लाइट रेनफॉल पई ओ रास्ता पई सीसी रास्ता पई सीमेंट कंक्रीट बा हाई टाइप बिटुमिनस सीमेंट कंक्रीट वाटर बाउंड मेकाडम हेले केते दे थांदा 1 in 33 33 एटा पछला तमरो जो 9 हमरो 1008 वाला पोस्ट 1 in 33 90 dash is the bottom most component of flexible payment तो सबुठु तळ लेयर को हम कोन कहबो सबुठु तळे कोन रहइबो सबग्रेड ऊपर रहइबो सबबेस कोर्स ऊपर रहइबो फास्ट सबुठु तळे रहइला दैट इज योर सबग्रेड जोडा होछ हमर एम्बैंकमेंट बा सॉइल ता ऊपर रहइबो सबबेस कोर्स ता ऊपर बेस कोर्स ता ऊपर बाइंडर कोर्स ता ऊपर रहइबो सरफेस कोर्स हैला सरफेस कोर्स केते रहइबो 25 रु 50 बाइंडर कोर्स 50 रु 100 mm बेस कोर्स 100 रु 300 सब बेस कोर्स होची 100 1000 रु ना 100 रु 1300 1.3 आ कॉम्पैक्टेड सबग्रेड होची 150 रु 300 तो डैश इज द बॉटम कोडा सबेस केते कहले सबेस सब बेस होची 100 रु 300 100 रु 300 बा 100 रु 400 सब बेस होची 100 रु 300 सब बेस होची 100 रु 400 रु 600 माने एटा रेंज उठे हला रेंज एमते कोई फिक्स पेलो नते निज जो काम अनुसार चेंज कर परियो डैश इज द बॉटम मोस्ट कंपोनेंट ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट चल कोन हो आंसर सबग्रेड
माने soil embankment which is not a greenhouse in earth's atmosphere greenhouse माने जे global warming cause करंती heat को trap करिवे आ छाड़िबेनी ओजोन होची गोटे कार्बन डाइऑक्साइड मिथेन वाटर वेपर ओजोन एमान सब होचन ग्रीन हाउस गैस सल्फर डाइऑक्साइड टा कोची कोन गोटे एटा गोटे पॉल्यूटेंट SO2 प्राइमरी पॉल्यूटेंट तो ऑप्शन सी है इज आंसर देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट 92 what is the maximum concentration of zinc present in drinking water in the absence of an alternate source drinking water रे maximum concentration केते जिंक रो 15 15 मिलीग्राम पर लिटर बा ppm टर्बिडिटी पूरा सीरियल मन दो टर्बिडिटी 1 5 कलर 5 15 जिंक 5 15 pH होची 6.5 रो 8.5 हार्डनेस होची 200 600 गोटे होची एक्सेप्टेबल आउट होची परमिसिबल अल्कालिनिटी 200 600 टेस्ट एंड ऑर्डर देले 1 आउ 3 हेला फ्लोराइड हेले 1 आउ 1.5 फ्लोराइड हेले 250 1000 आंसर विल बी 15 a sluice valve is an sluice valve टा कोन sluice valve हो जोटे गेट valve हला रेगुलेट करिया पई फ्लो को किबा कंट्रोल करिया पई फ्लो को रिफ्लक्स valve का को आजे रिफ्लक्स check valve बा नॉन रिटर्न valve दैट इज अ चेक valve 94 the function of a fish plate कोठी लगा जाय दीटा रेल को कनेक्ट करिया पई दीटा रेल को कनेक्ट करिया पई लगा जाय फिश प्लेट काई ना दिया जाय सेतरे माछ थांती ना कोन एटा होची फिश प्लेट कनेक्ट करिया पई केतटा बोट लागि थाए चारटा टोटल लागि थाए कनेक्ट करिवा पई द फंक्शन ऑफ ए फिश प्लेट इज टू होल्ड रेल्स टुगेदर इन को डायरेक्शन वर्टिकल होबनी ट्रैक जदी ऊपर को उठी जो ताको अटके रखिबनी ट्रैक जदी ये जदी एपट को जिवो यदि सेपट को जिवो अटके रखिबो जदी ये तळे अछि ये ऊपर को पळेबो ताको भी अटके रखिबो कि नहीं फिश प्लेट both horizontal and vertical planes 95 which of the following characteristics of ballast makes it unsuitable for use ballast हम यूज कोन for better drainage vibration load transfer करिवो से कोच एमान भितर को प्रॉपर्टी जोटा कि ताको अनसुटेबल करे यूज करे पे high water हाई वाटर अब्जॉर्प्शन हैला जदि वाटर अब्जॉर्प्शन बालास्ट अधिका हे गला देन सेटा खराब वाटर सब पळेबा दरकार वाटर अब्जॉर्प्शन इन एनी केस शुड नॉट बी मोर देन 1% जब हम बालास्ट यूज करियो हाई वाटर अब्जॉर्प्शन ऑप्शन बी इंजन सेट्स आर यूज्ड फॉर इंजन सेट्स कोन पे यूज करा जाय मेंटेनेंस आउ रिपेयर वर्क पे 97 the material placed in between the slippers and the top of the formation slipper out top of the formation भितर कोन यूज करा जाय ballast materials यूज कर ballast यूज करी 98 the process adopted to make the top surface of concrete marble but tile floors clean level and shiny से process को हमें कोन कोन पॉलिश करबानी जोडी तक मार्बल निज घरे देखिथिबा जे काम होतो मार्बल काम हेल सला परे तापरे गोटे 2 दिन 3 दिन खाली पॉलिशिंग चले ताको शाइनिंग सरफेस दवा पई सेटा से कोच द प्रोसेस अडॉप्टेड टू मेक द टॉप सरफेस ऑफ कंक्रीट बा मार्बल शाइनी करया पई दैट इज योर पॉलिशिंग गंटिंग और ग्राउटिंग कोन गंटिंग माने होचे प्रेशर रे कंक्रीट को एप्लीकेशन करिके क्रैक्स को फिल करबा ग्राउटिंग होचे जदि वाइड क्रैक्स थिबो आ स्मॉल डेप्थ थिबो सेठी भी प्रेशर एप्लीकेशन करके क्रैक्स को रिपेयर करबा किंतु शाइनी सरफेस प्रोवाइड करे को हमें कोनते ग्राइंडिंग बा पॉलिशिंग 99 construction equipment what is the conveyor system used for transporting loose materials जेमिति कि soil हे गला oats coal concrete etc without the need for full total enclosure मान ताको कवर न करी कि हमें जे ताको ट्रांसपोर्ट करबा ताको हमें कोन कहबा
एयरपोर्ट मान करे जेतले फ्लाइट रो आसीबो देखिबो सब बैग गुडा ट्रॉली बैग गुडा जो कन्वेयर रे आसु थाए सेथरे कोनोसे क्लोज थाए कि हेटा पूरा ओपनली आसु थाए कि नहीं बैग गुडा बेल्ट कन्फर्म ताको कोन कहबा बेल्ट कन्वेयर सेटा से कोच जोडी एनक्लोजर नथिबो ताको हम कोन कहबा एग्जांपल हो जी एयरपोर्ट रे जो ट्रॉली बैग आसे ट्रॉली बैग जो कन्वेयर आसे दैट इज योर बेल्ट कन्वेयर 100 if one soil permeability is 0.7 mm per second then ताको हमें कौन कहबा এটা डिस्कस करछन ऑलरेडी ग्राभेल हेले 1 cm per second बा 10 mm per second ता खाली mm रे पचा दीछ 0.7 तले कार होबो सैंड रो होबो सेंटीमीटर थिला ताको mm रे पचाची जदी फास्ट हला तमरो ग्राभेल ग्राभेल होची कोन 1 cm per second बा हम ता कोन कहि परिबा 10 mm per second that is your gravel सेमिति सैंड रो कोन हे जिवो 1 टू नै कि 10 टू द पावर -3 थिला 10 टू द पावर -3 माने कोन लिखा 1 टू नै कि 10 mm per second बा 0.1 टू नै कि 0.1 टू नै कि 10 mm per second तो देइ 0.7 आसुची माने दैट इज योर सैंड आमे हमको पढिचंदी परमेबिलिटी रे सेंटीमीटर रे पढिचंदी एठी खाली mm रे दे दिए 1 सेंटीमीटर जे 10 mm कंप्लीट मॉक टेस्ट 7 कंप्लीट आ खाली रही क्लियर है तो सर 8 क्लियर और 9 कोन कहले क्लियर प्ले प्लेयर जेमिति सेंटीमीटर रे करथिले सेमिति हमें mm रे करियो लिखि दोछि कोन फास्ट ला कोन ग्राभेल थिला 1 सेंटीमीटर पर सेकंड एटा कोन हे जिवो 10 mm पर सेकंड तापर आस्ता तमरो सैंड सैंड केते हे जिवो सैंड केते थिला 10 टू पावर -3 थिला माने 0.01 तो 0.01 रू नै कि 10 mm पर सेकंड एटा जो मोर देन 10 mm पर सेकंड 0.01 रू नै कि 10 दैट इज योर सैंड सैंड पुनी तीन प्रकार कोर्स सैंड फाइन सैंड मीडियम सैंड तापर आसबो तमरो सिल्ट सिल्ट हे जिवो 10 टू द पावर -4 mm पर सेकंड तापर आसीबो क्ले लेस देन 10 टू द पावर -4 बा -5 -4 mm पर सेकंड जेमी थिला सेमिति खाली सेंटीमीटर देइतला हटी एठी mm रे देइछ सुनो कंप्लीट कार किसी क्वेश्चन रहिला नहीं चलो थैंक यू Thank you, sir. आ जहाँ को भी ठीक है रिकॉर्डिंग टा ऑफ कर दे